Welcome to VLearn. This is part 2 of session number 11 of Sources of Finance. In this session, we are going to learn about short-term sources of finance. Now, in the previous session, we have already covered the long-term and mid-term sources of finance. In this session, we will know what are the short-term sources of finance? Now, short-term funds are required for meeting working capital requirements of business enterprises. जितने भी working capital requirements है किसी भी कंपनी के उसको मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए. शॉर्ट टर्म फंड्स ज़्यादातर एक साल से कम के टाइम के लिए चाहिए होते हैं, which is less than 1 year. And short term funds can be actually, you can get short term funds from credit, which is the soul of business. Without credit, no business can be run. These credit financing is a short-term financing common to almost all businesses. It is one of the major spontaneous sources of short-term financing. So सबसे पहला है credit. That is, of course, we can take help of credit. It may be of 3 types: open as, bills payable, and trade acceptances. There are several advantages of trade credits. One could be a major advantage, ready availability. एकदम से readily available होता है credit हमें. Absence of any formal agreement. इसमें कोई formal agreement नहीं चाहिए होता कि कुछ paper sign करने और something like that. No, we don't need that. Flexibility in financial structure, and credit is always flexible in financial structure. इसकी कोई range नहीं है कि आप इतना ही amount ले सकते हो. Could be it could vary. जितना आपको चाहिए उतना ही यूज़ कर सकते हो. लैक ऑफ रिजिडिटी इन रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रिलेशनशिप्स में. एंड ज़ीरो कॉस्ट नॉर्मली. जनरली इसका कोई रिफंडेबल कॉस्ट नहीं है, रीपेबल कॉस्ट नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट. नाउ, इंस्टॉलमेंट ऑफ क्रेडिट. बिजनेस फर्म्स में गेट क्रेडिट फ्रॉम इक्विपमेंट सप्लायर्स, and the supplier may allow the purchase of equipment with payments extended over a period of 12 months. Now, short-term credit can also be retained from the short-term certainly from a short-term investment, just like the suppliers can actually give the equipments and they can actually give the payments extended over a period of 12 months तक दे सकते हैं. और इसमें ये है कि assets को sell ऑफ करके कुछ पैसा जो आ रहा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. Now, accounts receivable. Under this arrangement, the accounts receivable of a business concerns are purchased by a financing company, or the money is advanced on a security accounts receivable, and the finance companies usually make advances up to 60% of the value of the accounts receivable pledged. जितनी भी value है complete, उसका 60% जितना है value of accounts receivable वो ज़्यादातर कंपनीज डील करती हैं. एंड देन देर इज़ कस्टमर एडवांस. अ फर्म में मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बाय टेकिंग एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर्स से पहले से एडवांस ले लेती है कंपनी किसी चीज़ के लिए. इस चीज़ से भी अपना वो फिक्स कैपिटल शो कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए. इट हैपन्स समटाइम दैट मैन्युफैक्चरर और सेलर ऑफ गुड्स रिसीवेबल पार्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ द गुड्स इन एडवांस. कई बार क्या होता है कि फुल पेमेंट आप ले लेते हैं किसी चीज़ की एडवांस में ही, तो वही जो एडवांस है वो काम आता है आपको शॉर्ट टर्म फंड के लिए. दिस अमाउंट रिमेन्स विद द सेलर टिल द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट. और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है. सो दिस इज सिंपल एज फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन. The commercial banks in India have been established as a joint stock company, mostly modeled on the lines of the British banks, which are purely commercial in nature. जो बाकी commercial banks हैं इंडिया में वो ज़्यादातर joint stock companies की तरह हैं, जो ज़्यादातर British banks की तरह ही commercial है in nature. और इंडिया में जो source of finance है वो working capital, source of finance for financing working capital are trade credit. ट्रेड क्रेडिट से एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट हमें मिल सकता है. नाउ द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज. एक तो लोन अरेंजमेंट ऑफ कैश लोन, सेकंड इज ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट, थर्ड इज कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, फोर्थ इज बिल परचेज्ड एंड बिल डिस्काउंट, एंड हाइपोथिकेशन एंड प्लेज. Now, in lieu, the company refers, the term lien refers to right of party to retain goods belonging to another party until a debit due to him is paid. Lien can be 2 types. दो तरह के lien होते हैं, particular lien and general lien. What is a mortgage? Mortgage, it is the transfer of interest in specific immovable property for securing the payment of money advanced.
Finally, it's an exercise for you to do it yourself after the session. What is meant by preference shares and what are the various types? Enumerate the merits and demerits of preference shares. What is meant by debentures and what are its various types? And what are the various sources available for working capital needs in India? That's all for this session. Thank you. Happy learning with We Learn.